Hello students, let's welcome to our YouTube channel Physics for UG. Now in this video we shall discuss today's equations. So in today's equation there are three equations, first, second and third today's equations. Now what are the equations mean? The equations give information about heat flow in a reversible process. क्योंकि हीट फ्लो क्या होता है, हीट फ्लो dq होता है और dq इक्वल टू TdS होता है आज पर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. सो dq TdS, सो TdS का मतलब dq होता है. सो TdS के इंफॉर्मेशन मतलब dq के इंफॉर्मेशन हमको मिल जाएगा. सो हीट फ्लो dq होता है. सो TdS का मतलब हमको हीट फ्लो के डिटेल्स मिलेगा. सो देयर आर थ्री TdS इक्वेशंस, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. They can be derived by assuming entropy S as a function of a pair of thermodynamic variables and then using Maxwell relations. फर्स्ट में क्या लेना है, एंट्रोपी को T एंड V के फंक्शन लेना है, एंट्रोपी को T एंड P के फंक्शन लेना है एंड एंट्रोपी को P एंड V के फंक्शन लेना है. तो इसके बाद हमको तीनों TdS इक्वेशन मिल जाएगा. सो लेट्स डिराइव द फर्स्ट इक्वेशन. The first TdS equation, let entropy be a function of two independent variables, that is T and V. फर्स्ट में हमको क्या लेना है, T as well as V. So entropy S equal to function of T and V. We can write ds as per a mathematical formula. ds equal to del S by del T dt प्लस डेल एस बाई डेल वी डी वी. क्योंकि एस फंक्शन टी और वी का है इसीलिए डेल एस बाई डेल वी हमको करना पड़ेगा, इसीलिए ऑल्सो डेल एस बाई डेल टी भी करना पड़ेगा. सो डेल एस बाई डेल टी आर वी एंड डेल एस बाई डेल वी डी वी. सो इसमें फर्स्ट पार्ट में वी कांस्टेंट, सेकेंड पार्ट में टी कांस्टेंट. ओके, इन द नेक्स्ट पार्ट मल्टीप्लाई टी ऑन बोथ साइड्स. बस्ट राइट हियर multiply T on both sides. So this part will be T, this part T, this part T. So the equation will be TdS equal to T into del S by del T at constant V and dt plus T into del S by del V T dV. So what is TdS? This TdS equal to same TdS. So T into del S by del T at constant V. This part is Cv and this part is dt. Why Cv? What is Cv? देखो Cv एक स्पेसिफिक होता है. Cv होता है स्पेसिफिक कांस्टेंट वॉल्यूम एंड Cp होता है स्पेसिफिक कांस्टेंट प्रेशर. तो Cp क्या होगा फॉर्मूला में, Cp इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर. सिमिलरली Cv क्या होता है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. सो dq का मतलब क्या है, dq TdS होता है. सो T del S by del T at constant volume and Cp equal to T del S by del T at constant pressure. So use these values here. So T del S by del T at constant volume equal to Cv and T delta S by delta V at constant. Okay, next part, in the second part we use the Maxwell equation. One part is Cv and the दूसरा part T del S by del V constant T. This part is actually the Maxwell relation. Which one? The del S by del V at constant T is del P by del T at constant V. This is actually the second Maxwell's relation. We use this part here in this part. Shortly equation TdS equal to Cv dt plus T del P by del T at constant V dV. This is the first TdS equation. Okay, let's move to the next part, that is second TdS equation. Okay, so in second TdS equation, let entropy be a function of T and P, temperature and pressure. So S is a function of T and P.
So take differential of both sides for ts. ds equal to del s by del t at constant pressure dt plus del s by del v dp, constant temperature, similar to the previous one. Multiply t on both sides. Tds equal to t del s by del t at p dt, t del s by del p at constant t dp. Okay, we use this formula Cp. This is the Cp because Cp equal to delta Q by del T at constant pressure and T del S by del T at constant pressure. And the next part is this is the Maxwell relation. Which one? This is the third Maxwell relation. We use this part here as del S by del P is equal to minus del V by del T at constant प्रेशर. सो दिस पार्ट माइनस प्लस मिला के हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा, माइनस टी डेल पी बाई डेल टी डी पी एंड फर्स्ट पार्ट इज सी पी डी टी. सो द इक्वेशन इज टी डी एस इक्वल टू सी पी डी टी माइनस टी डेल पी बाई डेल टी पी डी पी. दिस इज द सेकेंड टी डी एस इक्वेशन. Okay, next move to the last part, that is the third TDS equation. Here we take entropy. S is a function of pressure and volume P and V. So entropy S is a function of P and V. So what will be ds taking differentials? So del S by del P dP plus del S by del V dV. Here second part में P constant, first part में V constant. So similarly multiplying T on both sides, TDS equal to T into del S by del P V dP plus T into del S by del P P. Same as the previous one, same as the previous line, but T is multiplied only. So next line TDS equal to T into del S by del T, del T by del P. क्या हुआ, ये जो S होता है del S by del P, जो del S by del T हुआ और del T by del P, because del T here divided and del T multiplied, that means del S by del T हो गया, वहाँ पे del T by del P हो गया. सेम वॉल्यूम, सेम B कांस्टेंट, हियर B कांस्टेंट dP. उसके बाद del S by del V क्या होता है, del S by del T and del T by del V. del V with respect to फर्स्ट पार्ट में T हो गया, देन del T by del V. ओके, तो उसके बाद क्या होगा, TDS T into del S by del T at constant V. This part is CV. Okay, next part is del T by del P dP. ये part same हो गया, this part remains same and this part we took CV. Similarly in the second term T del S by del TP, this part is CP and the next part remains as same. So this equation is known as the third TDS equation. This is the third TDS equation. Okay, so there are three TDS equations. TDS equations means heat flow equations. Thank you. If you like this video, then you subscribe, like and share this channel. Thank you.